Biotechnology principle and processes. Biotechnology principle and process. Actually, biotechnology is the combination of two words, and that is what? Now, biology and technology. And definition क्या है? तो बहुत सारा definition है, मैं आपको दो तीन definition आपको बोल रहा हूँ जो आपको समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है. So it is actually technology based biology. Technology based biology, which is used for agriculture, food science, and also for medicine. And what is the actual definition of biotechnology? Now, using of other living organisms or microbes for own benefit, is called as biotechnology. ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है, दिस इज एक्चुअली ओल्ड बायोटेक. ये ओल्ड बायोटेक का डेफिनेशन है कि डायरेक्टली वी आर यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ना ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी. बट इसको अगर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया जाए कि यूजिंग ऑफ the principle or technique of microbes for human welfare, then it is called as the modern biotech. And modern biotech का हम लोग अदरवाइज क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. RDT. तो इसीलिए बायोटेक का अदर नेम है जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो ये तीनों सेम चीज है. बायोटेक भी जो है उसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं. फिर तीनों में डिफरेंस क्या है? ना देखिए, बायोटेक सिंपली मतलब क्या है ना, यूजिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ओन बेनिफिट. ठीक है, हम लोग दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म को हम लोग अपने बेनिफिट के लिए यूज करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, सिंपल बायोटेक. लेकिन इन द मॉडर्न वे हम लोग डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं करते. मॉडर्न बायोटेक में हम लोग उस लिविंग ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स का टेक्निक को यूज करते हैं. टेक्निक को यूज हम लोग करते हैं. सो मॉडर्न बायोटेक में हम लोग बायोटेक में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स के टेक्निक को यूज करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग. फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा आपको आइडिया देना चाहूंगा कि बायोटेक के साथ हम लोगों का बहुत ओल्ड रिलेशन है.
For example, we are eating what na curd, we are eating what na bread, अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, ईस्ट हम लोग यूज करते हैं फॉर द बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग सोडा घर घर में यूज करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारे के सारे क्या है ना, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके प्रोडक्ट बनाया गया। लेकिन हम इस चैप्टर में डायरेक्टली बायोटेक डिस्कशन नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग डिस्कशन करेंगे। समझ में आ गया? सो प्लीज राइट एवरीवन। According to European Federation of Biotechnology, according to European Federation of Biotechnology, the integration of natural science and organism, cells, parts thereof, OFF, and molecular analogues for product and services. तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको जो डेफिनेशन दिखाया, वो डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, बट बाकी मैंने आपको समझा दिया। नाउ वी आर कमिंग टू प्रोसेसेस और टू प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आप लोग हमेशा कंसेप्ट को लेके चलिएगा, बायोटेक इजी हो जाता है, बहुत इजी है। नंबर 1 क्या है ना, हम लोग को सपोज टू एग्जांपल लेके चलेंगे तो इजी होगा। सपोज टू वी नीड व्हाट ना, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। प्रीवियसली हम लोग जो इंसुलिन यूज करते थे, दैट इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ द स्लेटेड काउ एंड पिग। बट ये जो इंसुलिन है ह्यूमन बीइंग के लिए फॉरेन हो गया, एलर्जिक रिस्पॉन्स करेगा, अननेसेसरी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स विल क्रिएट। सो एज टू ओवरकम दैट, इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड ए इंसुलिन जीन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोटीनियस प्रोडक्ट हो बॉडी में तो उसके लिए एक रेस्पॉन्सिबल जीन होगा। जीन मीन्स डीएनए, देन आरएनए, देन प्रोटीन। तो इंसुलिन हार्मोन इज ए प्रोटीन बेस्ड हार्मोन, प्रोटीनियस हार्मोन हम लोग केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़े थे। एंड प्रोटीन दैट इज इंसुलिन, उसको बनाने के लिए एक रेस्पॉन्सिबल जीन भी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले उस इंसुलिन जीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड उस इंसुलिन जीन को किसी होस्ट के अंदर आप इंसर्ट करेंगे along with the that is vector. Now this host is called as, ये सब टेक्निकल वर्ड है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इस वर्ड को आप लोग याद करके उसको समझ लीजिएगा। Now the host is called as transformed host, as because the vector has been inserted into the host. बात को समझे? Now that host is called as what ना, transformed host, otherwise called as what ना, heterologous host. जिस host के अंदर हमने insert करने के लिए try किया लेकिन नहीं हुआ, then that host will be called as what ना, just opposite, homologous host or non-transformed host. So which host we need to select, transformed or non-transformed? Transformed. So as because we have inserted the foreign gene into the host cell ना, इसके वजह से हम लोग क्या किए ना, उस होस्ट का जीनोटाइप को हमने मॉडिफाई किया कि नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक मतलब जीन, इंजीनियरिंग मतलब मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब आइदर बाय मींस ऑफ एडिशन ऑफ ए फॉरेन जीन और बाय मींस ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ ए फॉरेन जीन। मैनिपुलेशन मतलब चेंज करना। जीनोटाइप को कैसे चेंज करेंगे, आइदर ऐड कर दीजिए या तो जो एग्जिस्टिंग जीन है उसको आप रिमूव कर लीजिए, then that will be called as what na, engineering, as because we are engineering by means of what,
ना, तो जीन बेस्ड इंजीनियरिंग सोल्ड एज कॉल्ड एज व्हाट ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अल्टीमेटली हमने जो फॉरेन जीन को इंसर्ट किया किसी होस्ट के अंदर थ्रू वेक्टर, वी आर चेंजिंग द जीनोटाइप। जीनोटाइप चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, दैट विल रिफ्लेक्ट इन द फेनोटाइप। तो जीनोटाइप आप अल्टर करेंगे तो फेनोटाइप तो चेंज होगा। तो व्हाट आर द टू प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ना? नंबर वन, जेनेटिक इंजीनियरिंग। नंबर टू, आपके पास अभी ट्रांसफॉर्म्ड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट दोनों है, बट यू कैन नॉट, नेकेड आई में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये ट्रांसफॉर्म्ड है, ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। तो उसके लिए हम लोग को एक एसेप्टिव कंडीशंस चाहिए। एसेप्टिव कंडीशन इज ओनली बीइंग प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट ना, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक हम कंसेप्ट बताएंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या है, एंटीबायोटिक सेंसिटिव जीन क्या है। आई विल डिस्कस ऑल दिस इन दिस चैप्टर। नाउ जो ट्रांसफॉर्म्ड है वो एंटीबायोटिक में ग्रो करेगा, कहीं पे नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है हमने किसको इंसर्ट किया है, कहां पे इनएक्टिवेट किया है, दैट इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। एनीवे, अल्टीमेटली एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज क्या करते हैं, क्यों करते हैं ना, टू क्रिएट अ एसेप्टिव कंडीशन सो दैट द ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्म कुड बी सेपरेट। सेपरेट हो गया, अभी पता चल गया कि ये ट्रांसफॉर्म्ड है, ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, and we have to choose what and transformed one with gene of interest or with foreign gene, and that is called as what na, that is your what na, principle and processes के अंदर second हो जाएगा maintenance of aseptic condition. So first हम लोग लिखते हैं two principle of biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी को मैं थोड़ा सा स्लोली आपको बताऊंगा, फास्ट जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिनिमम 10 to 12 है एवरी ईयर। सो वी विल गो फॉर दिस चैप्टर वेरी स्लोली, इजीली समझ के जाएंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डाउट ना हो। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टू टेक्निक व्हिच लीड्स टू two technique which leads to the formation of different biotech product। एंड मैं आपको पहले ही बोला हूं, अभी भी फिर से बोल रहा हूं, बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड प्रोडक्ट, लिपिड बेस्ड प्रोडक्ट, प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट और एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ है या कौन सा होगा, अमीनो एसिड बेस्ड प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड प्रोडक्ट, प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट और लिपिड बेस्ड प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट होगा बायोटेक का प्रोडक्ट? ऑलवेज प्रोटीन बेस्ड, क्योंकि बायोटेक में हम लोग कर क्या रहे हैं भाई, जीन को इंसर्ट कर रहे हैं टू चेंज द जीनोटाइप। सो फेनोटाइप अब एक्सप्रेस होगा तो फेनोटाइप क्या होगा, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस आप लोग पढ़े हैं। By means of transcription, by means of translation, we can only produce the protein. तो हमेशा याद रखना, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसको समझ के क्वेश्चन ही नहीं कर पाते इसका आंसर क्या होगा। उनके दिमाग में ये नहीं चलता कि बायोटेक का प्रोडक्ट हमेशा खाली जीन एक्सप्रेशन की वजह से होता है, दैट इज प्रोटीन बेस्ड। सो ये प्रोटीन बेस्ड, जितने भी एग्जांपल आप बायोटेक का प्रोडक्ट का ले लीजिए, ऑल आर प्रोटीन बेस्ड। नंबर वन, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, that is either DNA or RNA, and to introduce it to
and to introduce into the host organism. To change their phenotype. ये है number 1. Number 2, maintenance of sterile condition. Maintenance of sterile condition. Culturing of host. In microfree medium. In microfree medium and to produce only desired product in large scale. क्योंकि हम लोग को ह्यूमन वेलफेयर करना है तो हम लोग को लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए. स्मॉल स्केल प्रोडक्शन से अब ह्यूमन वेलफेयर करना पॉसिबल नहीं. तो वी नीड टू प्रोड्यूस द बायोटेक और प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल. Then only it could be helps in the human welfare. Now we are coming to the next topic, and that is what? Now, gene cloning. What are the methods of the gene cloning? बहुत ही simple है. Supposed to be we are taking one of the chromosomal DNA. Supposed to be this is a chromosomal DNA, and with the help of the restriction endonuclease, we got the gene of interest. With the help of the restriction endonuclease, we got the gene of interest. ये था chromosomal DNA. Chromosomal DNA को हमने कट किया. कट करके क्या निकला आपका? ना one of the gene of interest. इसको हम लोग gene of interest क्यों बोलते हैं? क्योंकि the gene in which we have the interest. सपोज टू मान लेते हैं ये एक इंसुलिन जीन है, तो इस इंसुलिन जीन में ही हम लोग का इंटरेस्ट है, हम उसको ही एक्सप्रेस कराना चाहते हैं, हम इसको ही प्रोटीन बनाना चाहते हैं. Then that is why it is called as what? Na gene of interest. So this is the gene of interest. For example, now we are taking a vector. Supposed to be मान लेते हैं प्लाज्मिड वेक्टर हमने लिया. Suppose to this is a plasmid vector. The bindings of the same restriction endonuclease which we have taken for the chromosomal DNA. Remember, chromosomal DNA के लिए जो restriction endonuclease आपने use किया था, same restriction endonuclease we have to use for the cleaving for the plasmid DNA also. Otherwise क्या होगा? अगर आप different restriction endonuclease use करेंगे for chromosomal DNA and for the plasmid or vector DNA, so what will be the complications? हम लोग कुछ देर के बाद पढ़ने वाले हैं कि when the restriction endonuclease will cut the DNA, that either create the sticky end or will create the blunt end. अगर हम लोग दो अलग अलग restriction endonuclease use करेंगे तो end mismatch करेगा, so that the DNA ligase is unable to ligate it. ठीक है, तो इसीलिए हमको सेम restriction endonuclease यूज करना है for both source of the vector and for the chromosomal DNA. Now that results into what? इसके वजह से क्या होगा ना, ये फ्लैंक हो जाएगा, ऐसे फ्लैंक हो जाएगा कि नहीं? हमको फ्लैंक चाहिए, फ्लैंक करना है, इसीलिए मैंने एक ही जगह पे कट किया है. दिख रहा है आपको?
लेकिन हमको एक फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए चाहिए क्रोमोसोमल डीएनए से, तो इसलिए हमने दो जगह पे कट किया है। मैंने समझे कि नहीं? तो so that we'll get the gene of interest from the chromosomal DNA and we'll get the flanking of the plasmid or vector DNA by means of cutting at a particular site of same restriction nucleus. Now this gene of interest is to be inserted by DNA ligase. यहाँ पे डीएनए लाइगेज इसको इंसर्ट करेगा, ज्वाइन करेगा. नाउ इट विल बी गुड, इट विल बी लुक्स लाइक दिस. इसको आप क्या बोलेंगे? नॉर्मल डीएनए के आरडीएनए क्या बोलेंगे इसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब देखिए और एक वर्ड आ गया. अभी सपोज टू बी हमने फ्लैंक किया, लेकिन फ्लैंक करके इस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको इंसर्ट तो किए, लेकिन इंसर्ट नहीं हुआ. इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल एक्टिविटी विल बी गेट 100% सक्सेस. Suppose to be it is being that is not able to insert that gene of interest into the flanking part of the plasmid vector. So then that will be called as what? The normal DNA. क्या बोलेंगे उसको? Normal DNA और non-recombinant DNA. क्या बोलेंगे उसको? तो समझ में आया क्या? Non-recombinant DNA मतलब only DNA without gene of interest. And recombinant DNA means vector or plasmid along with gene of interest. समझ में आ गया? हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट जहां पे है, हमको उसी को सिलेक्ट करना है कि सबको सिलेक्ट करना है? सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पे भी देख लीजिए, हम लोग को नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आपको सेपरेट करना पड़ेगा. नंबर वन. सेकेंड टाइम हम लोग फिर से क्या करेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड को सेपरेट करना है. जस्ट डोंट मिक्स द वर्ड. नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट अलग चीज है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्म्ड अलग चीज है. बात को समझे कि नहीं? नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट इज ओनली एप्लीकेबल टू डीएनए. ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड इज एप्लीकेबल टू होस्ट. नहीं क्लियर है? देखते हैं आगे. नाउ इट इज कॉल्ड एज आरडीएनए. अब इस आरडीएनए को हम लोग ट्रांसफर करेंगे इनटू होस्ट. दिस इज द होस्ट विद ओन डीएनए. अब इस होस्ट के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया. अब इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट की नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट. नाउ इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म्ड. और हेटेरोलोगस होस्ट. अब ये होस्ट जब भी ग्रो करेगा, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली यहाँ पे इस होस्ट को एक सुइटेबल मीडियम देंगे. जितना बढ़िया सुइटेबल मीडियम आप प्रोवाइड करेंगे इस होस्ट को, ये होस्ट भी मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं बोलिए? एंड द होस्ट विल मल्टीप्लाई along with the host. इसके अंदर जो वेक्टर डीएनए है along with the gene of interest, they will also what na replicate their number, they will also multiply the number like this. अब इसको क्या बोलेंगे? जीन क्लोनिंग ही तो बोलेंगे. मल्टीप्लिकेशन हुआ कि नहीं?
अब जिस होस्ट के अंदर इंसर्ट हमने किया लेकिन हुआ नहीं, उस होस्ट को अब क्या बोलेंगे? ये सपोज टू बी इंसर्ट मैंने किया लेकिन इंसर्ट नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और हेटेरोलोगस, सॉरी होमोलोगस। हम लोग को इसको रिजेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, एंड इसके लिए क्या चाहिए? मार्कर चाहिए कि नहीं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन चाहिए कि नहीं? एंटीबायोटिक चाहिए कि नहीं? एंड इसीलिए मैंने सेकंड पॉइंट आपको लिखाया था प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, क्या ना, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन सो दैट द कल्चरिंग होस्ट इन माइक्रो फ्री मीडियम। नहीं तो पता चला कि भाई होस्ट के साथ माइक्रो भी ग्रो कर रहा है और उसको पूरा कल्चर को बर्बाद कर देगा। We are coming to the next topic, construction of the artificial recombinant DNA. कंप्लीट है सबका? So we are coming to the next topic, construction of first recombinant DNA by Stanley Cohen and Harvard Boy in 1970। क्या बनाए थे वो हम बात कर लेते हैं। The first got a source of DNA with a gene of interest, and that gene of interest is here what? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। पहले तो वो एक डीएनए का सोर्स लिए, ये एक प्लाज्मिड डीएनए था, एंड प्लाज्मिड डीएनए से by means of the restriction endonuclease he got the gene of interest, and here the gene of interest is antibiotic resistant gene. So it is the gene of interest. जिस जीन पे हम लोग को काम करना है उसी को हम लोग बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ पे कौन सा जीन लिया, मतलब स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट डॉयर जब फर्स्ट कंस्ट्रक्ट किए थे 1972 में, तो किस जीन के ऊपर वो काम किए थे ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन व्हिच दे हैव बीइंग योर आइसोलेटेड और गेट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए। तो वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू उसको कट करके वो आइसोलेट कर लिए ना। दिस इज a bacteria called as Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium मतलब ये सैल्मोनेला बैक्टीरिया है। सैल्मोनेला बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर एक वेक्टर प्रेजेंट है, तो एक प्लाज्मिड प्रेजेंट है। इस प्लाज्मिड को वो बाहर निकाले। So what is the source of the vector plasmid for the construction of our DNA?
ना साल्मोनेला का प्लाज्मिड वो एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है, बाय मींस ऑफ द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस he cut this plasmid. कट करने के बाद तो फ्लैंक हो जाएगा, है कि नहीं? कट करने के बाद फ्लैंक हो जाएगा। अब ये जो फ्लैंक हुआ, फ्लैंकिंग पार्ट में ये जो निकाले थे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, को इंसर्ट कर, now this we can say this is your rDNA with gene of interest or without gene of interest, and that gene of interest is what? Antibiotic resistant gene. So this rDNA now it is with antibiotic resistance, ठीक है? अब हम लोग इसको क्या करेंगे ना, इंसर्ट करेंगे इनटू, एंड होस्ट चॉइस यहाँ पे लिया गया था वो था इकोलाई। इसका क्या सोर्स है देख लीजिएगा, प्लाज्मिड का सोर्स क्या था? सैल्मोनेला। होस्ट क्या था? इकोलाई। नाउ दिस rDNA is to be inserted into this E. coli or twist. Normal or homologous or non-transformed E. coli host doesn't have any antibiotic resistant gene. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कि नॉर्मल इकोलाई में कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन अभी जो हमने इकोलाई बनाया है ये क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड है कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है? ये क्या है? ट्रांसफॉर्म, और दैट इज हेटेरोलोगस होस्ट। तो ये जो अभी ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई में विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है कि विदाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? विद एंटीबायोटिक। समझे कि नहीं? लेकिन जिसके अंदर हमने इंसर्ट किया लेकिन इंसर्ट नहीं हुआ है उसको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और होमोलोगस और नॉर्मल इकोलाई होस्ट। उसमें क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन होगा? नो, so doesn't have any antibiotic। तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि which E. coli is transformed and which E. coli is non transformed। कैसे ना, एंटीबायोटिक में दोनों को ग्रो कराना है। जो एंटीबायोटिक में ग्रो किया मतलब उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, एंड जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हुआ वो क्या, यहाँ पे क्या बोलेंगे आप इसको? ट्रांसफॉर्म्ड की नॉन ट्रांसफॉर्म्ड? ना ट्रांसफॉर्म्ड। तो सिलेक्शन हो गया कि which is transformed and which is non-transformed. It is only because of the construction of what na rDNA. So this is the first, the artificial recombinant DNA or rDNA is to be prepared by Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. समझ में आ गया? Source क्या है, target क्या है, etc. etc. Now we are coming to the tools of the recombinant DNA technology.
कंप्लीट है सबका? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी RDT। टूल्स मतलब आपको क्या चाहिए ना, आपको कुछ काम करना है, आपके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ हथियार चाहिए, अरे है कि नहीं, कुछ मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए, तो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है। तो ऑलरेडी आप दो बार मैं बता चुका हूँ क्या क्या चाहिए। बताइए क्या क्या चाहिए। नंबर 1, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। इसको हम लोग मैनिपुलेटिव एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिफरेंट टाइप ऑफ मैनिपुलेटिव एंजाइम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैनिपुलेटिव एंजाइम में पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सेकंड है डीएनए लाइगेज। थर्ड है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। नाउ क्वेश्चन है कि हम लोग जो RDT कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं, एक्चुअली ये है क्या? इन विट्रो है कि इन विवो है? ये आर्टिफिशियल है। इट इज नॉट इनसाइड द होस्ट और इनसाइड द सेल। तो ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग लैब कंडीशन में कर रहे हैं, आउटसाइड द होस्ट कर रहे हैं। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली व्हाट टाइप? इन विट्रो। तो अभी क्वेश्चन आ गया कि भाई अगर RDT इन विट्रो है तो क्या ये सेम प्रोसेस होना चाहिए जो इन विवो में होता है? इन विवो में डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में जो जो प्रोसेस होता है, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, जो जो यूज होता है नॉर्मल प्रोसेस में इन विवो में, या सेम टाइप ऑफ एंजाइम कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द इन विट्रो? या देखिए कंट्राडिक्शन आ गया। जब तक आप उसके अंदर घुसेंगे नहीं आपको क्वेश्चन दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि बायोटेक a mass of question, a collection of question, a series of question, every step में क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। दिखता बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं है इजी। हर स्टेप में आपको दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। दिस इज नॉट ए इन विवो, ऑल्दो इट इज इन विट्रो। तो सेम टाइप ऑफ एंजाइम व्हिच आर यूज्ड ड्यूरिंग द इन विवो कंडीशन नॉट एप्लीकेबल टू इन विट्रो। तो अभी क्वेश्चन आ गया, व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम बीइंग यूज्ड इन विट्रो RDT? The restriction endonuclease enzyme type 2, DNA ligase, T4 DNA ligase, and DNA polymerase type 1। अभी आप कंपेयर करिए, आप लोग जो नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन पढ़े थे उसमें कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है? टाइप 2। यहाँ पे क्या यूज किया हमने? वहां पे नॉर्मल डीएनए लाइगेज था, यहाँ पे अलग टाइप का डीएनए लाइगेज हो गया, T4 डीएनए लाइगेज। इन विवो में टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज होता है, बट इन विट्रो में हम लोग क्या यूज करें? टाइप 2। कहानी बहुत अलग है, उसका कॉज बहुत अलग है। हम लोग उस कॉज को थोड़ा सा हाइड करके निकलते हैं आगे, क्योंकि ये कॉज जरूरत नहीं। नेक्स्ट नंबर 2, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम तो हो गया, और क्या चाहिए भाई? वेक्टर चाहिए कि नहीं? और क्या चाहिए? होस्ट। यही तीन चीज चाहिए ना। So we are coming to the one by one. We will start. First, we are coming to the set of enzyme, manipulative enzyme, that is restriction endonuclease. Start करें। Restriction endonuclease से start करते हैं।
First, we will discuss about the restriction. Then we will go for the endonuclease. What is the meaning of restriction in the restriction endonuclease? What is the correct explanation for the your restriction word in the restriction endonuclease? Restriction का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या है ये? Restrict का मतलब क्या है? किसी को स्टॉप करना, किसी को रोकना, right? So this word is also resemble to that concept. And उस concept को जानने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि bacteria have two methods to protect from bacteriophage infection. So it is actually a natural defense mechanism of bacteria against what? The bacteriophage. So it is actually the natural defense of bacteria against bacteriophage. And this two method, देखिए हमारे बॉडी में भी सेम टाइप का मेथड प्रेजेंट है. फर्स्ट में मुझे कोई अटैक कर रहा है एंटीजन, ठीक है, तो मुझे कोई एंटीजन अटैक किया तो मैं अपना एंटीबॉडी बनाता हूँ बॉडी के अंदर, एंड दैट एंटीबॉडी विल अटैक द एंटीजन. मतलब ये ऑफेंसिव हुआ कि डिफेंसिव हुआ? ऑफेंसिव, अटैकिंग द एंटीजन. But same antibody could have the chance to attack the own cell of your body. Yes or no? मतलब ये फॉरेन को अटैक कर रहा है तो ऑफेंसिव. कभी कभी ये सेम एंटीबॉडी आपके बॉडी के खुद अपना सेल को भी अटैक करता है, समझे कि नहीं? एंड दैट गिव्स राइज टू एन ऑटो इम्यूनिटी. तो बैक्टीरिया को भी वही सेम टाइप का करना है, मतलब फॉरेन को अटैक भी करना है, खुद को प्रोटेक्ट भी करना है. इसलिए दो मेथड मैंने लिखा है. एंड व्हाट इज दैट? वन इज restriction enzyme, another is methylating enzyme or methylation enzyme. ये जो मिथाइलेशन एंजाइम है इसका काम क्या है, एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसका काम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है रेस्ट्रिक्शन, एंड ये मोस्टली ऑफेंसिव होती है, मतलब अटैकिंग हुआ कि नहीं. लेकिन मिथाइलेटिंग एंजाइम के ना मॉडिफिकेशन करता है, एंड इट इज डिफेंसिव. का मतलब भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में. Restriction enzyme will restriction or offensive function. How? Now it cut the viral DNA at specific site to restrict the multiplication of virus. समझ में आया अभी
कि भाई why the word is restriction ना, because it is restricting the multiplication of virus. How? Now by means of cutting the viral DNA into pieces. अगर वो वायरस का डीएनए को कट करके पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, बैक्टीरियोफेज का डीएनए को कट करके अगर पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, so is it possible now the viral DNA will replicate to transcribe to translate the viral protein? No. अगर वायरल प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो वायरस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेगा? So that is why it is the natural difference of the bacteria against bacteriophage by means of the cutting the viral DNA into pieces to restrict the growth of the virus, to restrict the multiplication of the virus. इसीलिए ये वर्ड है रेस्ट्रिक्शन. सेम पॉइंट यहाँ पे दूसरे एंगल से देखते हैं कि देखिए अल्टीमेटली ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है ना, एक टाइप का एंजाइम है. आप एंजाइम चैप्टर पढ़े हैं. एंजाइम होते हैं स्पेसिफिक. एंजाइम का काम क्या है ना, उसका सिर्फ सबस्ट्रेट को वो बाइंड करेगा टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. एंजाइम का काम क्या है ना, उसको सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन करना. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंजाइम ना? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ये कौन से टाइप का एंजाइम है ना? न्यूक्लियेज है, क्योंकि ये डीएनए को कट कर रहा है, मतलब न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहा है. न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहा है तो ये कौन सा कैटेगरी होगा? न्यूक्लियेज. मतलब इसका काम है सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और डीएनए आरएनए को कट करना. वायरल डीएनए को अगर जो कट किया वो बैक्टीरिया का ओन डीएनए को भी कट कर सकता है कि नहीं? क्योंकि उसका काम है टू कट द न्यूक्लिक एसिड और डीएनए. अगर वो वायरल डीएनए को कट कर सकता है तो बैक्टीरिया का जो ओन जीनोम है उसको भी तो कट कर देगा. मतलब बैक्टीरिया के पास दूसरा चैलेंज क्या है ना, टू प्रोटेक्ट देयर ओन जीनोम. इसीलिए मॉडिफिकेशन एंजाइम प्रेजेंट है. एंड दैट मॉडिफिकेशन एंजाइम इज नन अदर देन ए मिथाइलेशन एंजाइम, जिसका काम है ओन डीएनए को मॉडिफाई करना, मिथाइलेशन के थ्रू मिथाइलेटेड कर देता है, ताकि ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, जो स्पेसिफिक साइट है, वो क्लोज हो जाए. अगर स्पेसिफिक साइट को हम लोग हाइड कर देंगे by means of modification, by means of methylation, is it possible that the restriction endonuclease will bind with the that is own genome to cut it? No. अरे समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है तो अच्छा है, नहीं समझ रहा है पूछ लीजिए. So modification enzyme will modify own genome, prevent from autocatalytic autocatalysis of restriction enzyme. इसीलिए मैंने लिखा था कि बैक्टीरिया हैव टू मेथड्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन. एक तो हो गया रेस्ट्रिक्शन ऑफेंसिव, दूसरा है मॉडिफिकेशन डिफेंसिव. एंड एंजाइम का नाम आपके सामने. तीन साइंटिस्ट इसके ऊपर काम किए थे एंड तीनों को जॉइंटली नोबेल प्राइज भी मिला था. वर्नर हार्बर, discovered restriction enzyme and postulated that these enzymes bind to DNA at a specific site. He was studying on इनका जो रिसर्च पेपर था, जिस एरिया में उनका रिसर्च था, that is called as host controlled restriction of bacteriophage.
इस एरिया के ऊपर वो काम कर रहे थे, इस रिसर्च कर रहे थे इस चीज के ऊपर कि होस्ट कंट्रोल्ड रेस्ट्रिक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। एंड यहाँ पे होस्ट कौन है? बैक्टीरिया। होस्ट कंट्रोलिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज, एंड ये डिस्कवर किए थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नंबर 2, हैमिल्टन स्मिथ। He verified Arber's hypothesis. He verified Arber's hypothesis and discovered first restriction endonuclease called what? HindE2. First restriction endonuclease discovered is HindE2 by Hamilton Smith. Third is Dan Nathan. He discovered the application of, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो डिस्कवर हो गया। डैन नेथन उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कैसे यूज करना है वो डिस्कवर किया। डिस्कवर द एप्लीकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन बायोटेक। Jointly, all three received Nobel Prize in 1978. अभी मेरा छोटा सा क्वेश्चन, आई होप कि आप लोग अगर समझे हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? हम लोग अपना जो बनाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सोर्स क्या होना चाहिए, मतलब हम लोग जो बायोटेक के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं कहां से लाते हैं? बैक्टीरिया। हम लोग अभी तो देखे, इट इज अ नेचुरल डिफेंस ऑफ बैक्टीरिया अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सोर्स क्या होगा? ना एनिमल सेल होगा, ना प्लांट सेल होगा, ना ईस्ट सेल होगा, ना वायरस होगा। कौन होगा? ना बैक्टीरिया, बिकॉज इट इज ओनली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, as it is a cellular defense mechanism of bacteria against bacteriophage। और किसी में होने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका काम है बैक्टीरिया में। That is restriction endonuclease, source of restriction endonuclease from prokaryotic cell or from bacteria। ऑलरेडी मैंने लिख दिया है वो स्टेटमेंट, वो सेंटेंस, इट इज द नेचुरल डिफेंस ऑफ बैक्टीरिया अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। ठीक है, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट। द टॉपिक इज एंडोन्यूक्लियस। मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझा दिया, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं एंडोन्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस, nuclease means what? Those who cleave the enzyme which cleave nucleic acid। The enzyme which cleave the nucleic acid is called as nuclease। हम लोग पढ़े थे ना deoxyribonuclease, ribonuclease, digestion chapter। So those who cleave the nucleic acid are called as nuclease। and ये दो टाइप का, एक है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा है एंडोन्यूक्लियस।
लेकिन मीनिंग सर समझ में आना चाहिए. Exonuclease means that will cleave the nucleic acid externally or internally. External part of nucleic acid, internal part of nucleic acid. So that will cleave the nucleic acid externally. अगर एक्सटर्नली ये क्लीव करेगा तो क्या रिलीज होगा? फ्रैगमेंट विल फॉर्म और इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड विल रिलीज. ये है एक न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, वो पेरिफेरली कट करेगा कि इंटरनली कट करेगा? इट इज एक्सो और एंडो. तो एक्सो है तो आउटसाइड कट करेगा ना, बाहर की तरफ में कट करेगा. तो बाहर की तरफ में क्या है? न्यूक्लियोटाइड 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 पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड. तो कट करेगा बाहर, क्या रिलीज होगा? न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड अगर रिलीज होता है कौन सा बॉन्ड ये ब्रेक कर रहा है? बायोमोलिक्यूल का टॉपिक और एप्लीकेशन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो दैट ओनली द न्यूक्लियोटाइड विल रिलीज्ड. बट अगर एंडोन्यूक्लियस की बात करें, एंडोन्यूक्लियस की बात करें, क्या हो रहा है? ये इंटरनली कट कर रहे हैं. आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए चाहिए, तो आप क्या करेंगे? एक्सोन्यूक्लियस यूज करेंगे कि एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे? बिकॉज यू नीड टू क्लीव इट इंटरनली टू क्रिएट ए what na fragment of DNA, and for that we need to what na go for the endonuclease. Endonuclease में भी वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक डाउन कर रहा है कि नहीं? लेकिन एक्सोन्यूक्लियस में फिर से दोबारा सोचिए, इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड रिलीज हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो ब्रेक डाउन होगा. ये है कहानी. समझ में आया कि नहीं? रिलीज individual nucleotide break phosphodiester bond and hydrogen bond. Supposed to be, खुद समझ लीजिए, बहुत इजी है. ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए and supposed to be these are the nucleotides. Polynucleotide gives rise to nucleic acid. समझ में आ रहा है? कट कहाँ पे कर रहा है वो? एक्सटर्नल पार्ट में कि इंटरनल पार्ट में? यहाँ पे कट करेगा. इसको रिलीज करना क्या है? इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड रिलीज करना है कि नहीं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो ब्रेक डाउन होगा. लेकिन हम लोग अगर एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं तो दैट विल क्लीव the nucleic acid internal and will form the fragment that will break the phosphodiester bond. अगर आपको फ्रैगमेंट चाहिए तो आप इंटरनली कट करेंगे. इंटरनली कट करेंगे तो सपोज टू बी यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ, तो आपको एक फ्रैगमेंट मिल जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो वी नीड अ फ्रैगमेंट. तो फ्रैगमेंट आपको चाहिए तो आपको एंडोन्यूक्लियस यूज करना है, and that is why this enzyme is called as restriction endonuclease. So we are coming to the next restriction endonuclease का हम लोग मैकेनिज्म डिस्कशन करेंगे. हो गया सबका? तो प्लीज राइट. each restriction enzyme recognize a specific
Each restriction enzyme recognize a specific palindromic nucleotide sequence. Palindromic nucleotide sequence. PALINDROMIC. Palindromic nucleotide sequence in DNA. In DNA to bind there and cut it. To bind there and cut it. भाई बहुत ही सिंपल है, आप लोग जानते हैं. It's supposed to be मैडम हो गया. आप 5' to 3' पढ़िए या तो 3' to 5' पढ़िए. ठीक है, दो स्ट्रैंड है हमारे पास. दो स्ट्रैंड में एनी वन सीक्वेंस यू नीड टू फॉलो. अपर स्ट्रैंड में अगर आप 5' to 3' फॉलो कर रहे हैं तो लोअर स्ट्रैंड में भी 5' to 3' ही फॉलो करना है. ऐसा नहीं कि आप अपर स्ट्रैंड में 5' 3' फॉलो किए और लोअर स्ट्रैंड में 3' 5' फॉलो किए, गलत हो जाएगा. Means orientation of reading will be kept same or different? Kept same. Then only the nucleotide base sequence will be of same in both strand. Is called as palindromic sequence. जैसे कि आप इधर से पढ़िए या उधर से पढ़िए, सेम हो रहा है कि नहीं? चलिए राइट. Palindromic is a sequence of base pair. Palindrome is a sequence of base pair. Palindrome is a sequence of base pair that read same. That read same on the two strand. That read same on the two strand when orientation of reading is kept same. When the orientation of reading is kept same. It ranges from, full stop देके लिखिए, it ranges from 4 to 8 nucleotide base. 4 to 8 nucleotide base. एंड हम लोग जिस चीज को यूज करते हैं कट करने के लिए, अब इसको क्या बोलते हैं? नाइफ बोल सकते हैं, सीजर बोल सकते हैं, स्कैल्पेल बोल सकते हैं, कटर बोल सकते हैं. यस और नो? एंड ये क्या कर रहे हैं? कागज काट रहा है. क्या काट कर रहा है? क्या कट कर रहा है? ये मॉलिक्यूल कट कर रहा है. दैट इज बाय restriction endonuclease otherwise called as what? The molecular scissor, molecular cutter, molecular knife, molecular scalpel. ये जितने भी वर्ड मैंने लिखा सेम फंक्शन है, दैट इज कटिंग. नाउ वी विल गो फॉर द फर्स्ट restriction endonuclease. क्या डिस्कवर हुआ था? हिंड 2 है कि नहीं? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. हिंड 2 नोमेनक्लेचर डिस्कशन करते हैं. हमने लिया फर्स्ट restriction endonuclease यूज्ड, इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही बोलते हैं. अब हिंड 2 नहीं बोलेंगे, हिंड डी, क्या बोलेंगे? हिंड D2. H, the first letter, indicate the name of the genus. For example, here
हेमोफिलस। Second two later represent the name of the species. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, इन्फ्लुएंजा। The next letter is representing the name of the strain or name of the breed. हम लोग प्रीवियस क्लास में ही पढ़े थे कि ब्रीड क्या होता है, closely related individual belongs to same species. ठीक है, most of the characters are similar are called as what ना breed. तो breed को हम लोग अदरवाइज क्या बोले ना, strain. तो ये कौन सा strain है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ना D strain. And the last one is order number. Order number in which it is isolated from same strain or same breed. ये जो D strain वाला हिंडी 2 बैक्टीरिया था, D strain वाला हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया से कितने ऑर्डर में ये इसको रिकवर किया गया था, आइसोलेट किया गया था। आप बोले कि सर अगर ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है तो इट शुड बी हिंडी 1, अरे है कि नहीं? अगर ये फर्स्ट डिस्कवर्ड तो व्हाई शुड इट इज हिंडी 2? 2 मतलब ये सेकंड ऑर्डर, मतलब कोई तो फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब हिंड इस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से डी स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया से फर्स्ट भी आइसोलेट किया गया होगा, तो उसको हम लोग फर्स्ट डिस्कवर्ड क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो रिजेक्टेड था, वो क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं था, इसीलिए। बात को समझे? आप लैब में जाते हैं, किसी भी आप बायोटेक लैब में जाइए, आपको बहुत सारा कंटेनर मिलेगा एंड हर एक कंटेनर को पूरा एकदम टैग देके लिख के रखा जाता है कि ये कौन सा चीज है, ये कौन सा चीज है, ये नंबरिंग क्या है, हर चीज पूरा एकदम सिस्टमैटिक रहता है। बात को समझेगी नहीं? तो दिस इज द फर्स्ट, ये दैट इज डिस्कवर्ड एंजाइम, दैट इज हिंडी 2। अभी हम लोग बात करते हैं इसका रेस्ट्रिक्शन साइट। The restriction site of Hindi 2. This is the restriction site of Hindi 2 or palindromic sequence of Hindi 2. तो यहाँ पे पैलेंड्रिक सीक्वेंस आप देखिए, हम लोग सपोज टू बी 5 days to 3 days ले रहे हैं, ठीक है? तो 5 days to 3 days आपने एक स्ट्रैंड में लिया, तो दूसरे वाले स्ट्रैंड में भी आपको 5 days to 3 days लेना है। सीक्वेंस क्या है? जीटीसी जीएसी, दोनों में देखिए जीटीसी जीएसी हो रहा है कि नहीं? मतलब थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट स्ट्रैंड की बात करते हैं, थर्ड न्यूक्लियोटाइड में बी एनी पाइरीमाइडिन and fourth one is any purine, अरे है कि नहीं? तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? any purine then any pyrimidine। क्लियर है? ये इसीलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है।
जरूरी नहीं है कि जीटीसी जीएसी हो, कुछ भी हो सकता है, जीटीटी एएसी, जीटीसी एएसी, ऐसे भी हो सकता है। अगर समझेगी नहीं बात को, तो ये एनी पाइरिमेडिन होगा तो उसका रिवर्स साइड में दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा, एनी प्यूरिन। अगर फोर्थ वाला एनी प्यूरिन हुआ तो नेक्स्ट स्ट्रैंड में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री साइड एनी पाइरिमेडिन। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जीटीसी जीएसी, ऐसे बोलते हैं। तो क्लियर है, याद रखना कंपलसरी है। We are coming to the working of restriction endonuclease. Restriction endonuclease when added to DNA will first inspect the entire length of DNA, find their own palindromic restriction site, find their own palindromic restriction site or recognition site, find there to cut it. ये है उसका मैकेनिज्म कि कैसे करता है ना। जब भी आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के डीएनए के साथ मिक्स कर देंगे, पहले वो पूरा एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए को पहले पूरा सुपरवाइज करेगा, इंस्पेक्ट करेगा टू फाइंड दैट palindromic sequence or restriction site for the same the specific restriction endonuclease. मैंने आपको IND2 का restriction site और palindromic sequence जैसे बताया GTC GAC, हर एक restriction endonuclease का एक एक palindromic sequence और restriction site present है। तो इसलिए मैंने लिखा फाइंड द ओन पैलिंड्रिक रेस्ट्रिक्शन साइट। किसी दूसरे का पैलिंड्रिक सीक्वेंस से रेस्ट्रिक्शन साइट से उनको कोई लेना देना नहीं है। एंड दे विल बाइंड देयर टू कट। एंड ये जो कट करता है टू प्रोड्यूस आइदर स्टिकी एंड और स्टिकी को हम लोग अदरवाइज क्या बोलते हैं, कोहेसिव, और अदरवाइज कॉल्ड एज स्टैगरिंग एंड। So either it will produce the sticky or cohesive or staggering end, or will produce the blunt or plus end। मतलब ये जो कट करता है, कट करने के वजह से दो टाइप का एंड प्रोड्यूस हो सकता है, either sticky or cohesive or staggering end, or it may produce what na blunt or plus end। हम आपको दिखाएंगे कोहेसिव एंड स्टिकी एंड क्या होता है, ब्लंट एंड क्या होता है। So by taking the example of two different, हम पहले एग्जांपल लेते हैं इको R1 का, that is GAATTC। जैसे हिंडी2 का रेस्ट्रिक्शन साइट क्या था ना, GTC GAC, वैसे इको R1 का रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है, GAATTC। लेट्स सी, मान लेते
मान लेते हैं सपोज टू बी GAATTC, यह हो जाएगा GAATTC। हमने आपको बताया था कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी यूज्ड फॉर बोथ, क्या वेक्टर के लिए प्लस क्रोमोसोमल डीएनए। Supposed to be this is chromosomal DNA and supposed to be this is vector DNA, and we are using the same restriction endonuclease supposed to be, यहाँ पे हम लोग यूज किए इको R1। इको R1 इसको भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा, because both the DNA will be cut through the same restriction endonuclease, and here the cleaving site for the echo R1 is in between the G and A, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। Same for the vector DNA also। एरो मैप का सीक्वेंस कहां पे हम लोग इंडिकेट किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं समझे? अभी देखिए कट हो गया, कट होने के बाद ये जो पार्ट था वो लॉस हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि कट तो इधर हुआ ना, यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट, तो लॉस हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी लॉस्ट। ये वाला लॉस होगा, ये वाला लॉस होगा, ये वाला लॉस होगा, एंड ये वाला लॉस, क्लियर है? This overhanging structure or the end is called as what? ना sticky। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टिकी एंड। ये जो ओवरहैंगिंग दिख रहा है आपको, ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर which is present after the cleaving of the restriction endonuclease will produce what? The sticky end। अब आप चेक कर लीजिए, ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो डीएनए लाइगेज उसको आराम से ज्वाइन कर ले, नहीं कर लेगा? हाँ।
देखिए यहाँ के यहाँ पे ज्वाइंट कर सकते। इसको आप क्या बोलेंगे अभी? नॉर्मल डीएनए की रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बोलेंगे इसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दिस इज एक्चुअली फॉर द इक्वार्मा, अदरवाइज हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी स्टैगरिंग एंड, कोहेसिव एंड और स्टिकी एंड। आप सोचिए अगर डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए एंड वेक्टर डीएनए के लिए अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सोर्स होता तो क्या हालत होता? क्या ये एंड मैच करता? नहीं होता। डीएनए लाइगेज उसको ज्वाइन ही नहीं कर पाता। तो बाकी हम लोग सेकंड आते हैं, SMA1 सेकंड वाला। ये इक्वार्मा था, अभी हम SMA1 दिखाते हैं, एंड दैट इज CCCGGG। देखिए इसका कटिंग साइड कहां पे? एग्जैक्टली एट सेंटर, and that will produce the end called as what? Gland. अब इसको बोलेंगे आप ब्लड। डिपेंड करता है कि ये एरो मार्क कहां पे दिया हुआ है। अगर एरो मार्क within the sequence but little away from center, क्या है? स्टिकी एंड का मतलब क्या है? स्टिकी एंड का मतलब क्या है? ना दैट इज कटिंग साइट इज the restriction endonuclease cut within the restriction site, but little away from center. Then that will produce which end? कौन सा एंड प्रोड्यूस करेगा? ना स्टिकी एंड। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उल्टा हो गया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस will cut the within the restriction site but little away from the center. जैसे कि आप देखिए ये in between the G and cut A कट कर रहा है, but within the sequence little away from the center and exactly at center होगा तो then it produces what? Na blood. तो आई होप आप लोग को मैकेनिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का थोड़ा सा एग्जांपल डिस्कशन करेंगे। 3 एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, इंडी2, इक्वार1, SMA1, और कुछ है खाली मैं आपको एंड बताऊंगा कि वेदर दे आर प्रोड्यूसिंग द स्टिकी एंड और दे आर प्रोड्यूसिंग द ब्लंट। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ना साइट ऑफ एरो मार्क है कि नहीं। अगर साइट ऑफ एरो मार्क विद इन द सेंटर एग्जैक्टली एट सेंटर होगा तो ब्लंट, लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर विद इन द सीक्वेंस होगा तो स्टिक। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट।